LIC लाया है जीवन उत्सव, जो जीवन भर के लिए दे 10% बीमा राशि के साथ जीवन बीमा। आज ही LICindia.in पर जाएं। नियम और शर्तें लागू। LIC लाया है जीवन उत्सव, जो जीवन भर के लिए दे 10% बीमा राशि के साथ जीवन बीमा। आज ही LICindia.in पर जाएं। नियम और शर्तें लागू। LIC लाया है जीवन उत्सव, जो जीवन भर के लिए दे 10% बीमा राशि के साथ जीवन बीमा। आज ही LICindia.in पर जाएं। नियम और शर्तें लागू। This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra, our program in which we give you a complete update on the economic news of the day. I am Gaura Dhawanlal and with me is my co-anchor in Hindi, Vibhuti Mishra. धन्यवाद गौरा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की ताज़ा खबरें आपके लिए लेकर आए हैं और उन पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हरवीर सिंह। हरवीर जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी गौरा धवनलाल। Vibhuti, thank you very much. And we would like to begin with the headlines, but before that we take a short break. इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम NPS। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। मानसिक शांति के साथ साथ NPS जीवन में संतुष्टि भी लाता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी NPS से जुड़ सकता है। किसी भी POP जैसे बैंकों, NBFC के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना NPS खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए NPS जरूरी है। मिलिए दान बहादुर जी से। अरे, अमीर बनने का सबसे आसान तरीका है ऑप्शन ट्रेडिंग। सारे रिस्क समझे, पूरी रिसर्च की, एक्सपीरियंस है, थोड़ा थोड़ा और लॉस होगा पूरा पूरा। ऑप्शंस में रिस्क ज्यादा होता है, समझ और क्षमता के हिसाब से लें। स्टॉक मार्केट में लापरवाही न बरतें, दान बहादुर न बने। हाँ, अगर दान करना ही है तो अपनी सोच से करें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। Well, now that our sponsors have had their stay, listeners, let's take a quick look at the headlines. Key domestic stock indices hit fresh milestones today. Sensex ends above 72,000 mark for the first time. Nifty settles over 21,650. Cabinet approves minimum support price for copra for 2024 season. And State Bank of India SBI hikes interest rates on certain fixed deposits by up to 0.5%. प्रमुख घरेलू शेयर बाजार आज नए शिखर पर। सेंसेक्स पहली बार 72,000 के पार बंद। निफ्टी 21,650 के ऊपर बंद। 2024 में कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी। और SBI ने विभिन्न अवधि की सावधि जमा के लिए ब्याज दरों में ½ तक की वृद्धि की। और शेयर बाजार से आज बड़ी खबर। प्रमुख घरेलू शेयर बाजार ने आज नई ऊंचाई को छुआ और लगातार चौथे सत्र में बढ़त के साथ बंद हुए हैं बाजार। सकारात्मक वैश्विक संकेतों के दम पर बाजार की शुरुआत बढ़त के साथ हुई और दिन बढ़ने के साथ ही सेंसेक्स पहली बार 72,000 के पार चला गया। सेंसेक्स 702 अंक या 1% बढ़कर 72,038 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 213 अंक यानी 1% बढ़कर 21,655 पर बंद हुआ। BSE के व्यापक बाजार में मिड कैप इंडेक्स में 0.4% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.2% की बढ़ोतरी हुई।
Key domestic stock indices hit fresh milestones today and ended higher for the fourth straight session. On the back of positive global cues, the market started in the green and extended the gains as the day progressed, with the Sensex crossing 72,000 for the first time. The Sensex skyrocketed 702 points or 1% to finish at 72,038. The Nifty also rose 213 points or 1% to close at 21,655. In the broader market at the BSE, the mid-cap index gained 0.4% and the small-cap index climbed 0.2%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 28 companies appreciated, while those of 2 companies declined. Ultratech Cement surged 4.2%, while JSW Steel and Tata Motors gained 3% each. On the other hand, NTPC declined 1.2% and Tech Mahindra lost 0.1%. In sectoral indices at the BSE, 15 sectors logged gains, while 5 declined. The auto sector and metal sector climbed about 1.3% each. The commodities sector gained 1.2%. On the other side, the oil and gas sector and services sector fell 0.4% each. Power and energy sectors also slipped 0.2% each. The overall market breadth was positive as shares of 1,993 companies appreciated, while those of 1,815 declined. A total of 106 companies remained unchanged. Harviji, the market touching new highs, and of course there has been buoyancy in the market and we've been expecting it to go, but fourth straight successive gains, and I think a lot of naysayers who were saying the market will correct, proving it wrong. Now, a few sessions back, we have seen a sharp drop in the market, and then market again started going upwardly. Actually, market took a clue from the global developments and global economy, as well as there are indications that in 2024, US Fed may change the stance on interest rates. So in that case, the flow of the money will increase to the emerging economies, and India is one of the most beneficiary of the global funds flow. Right, absolutely. In fact, when we talk of, and I know that we are saying that next year is an election year, and then of course there's the budget, so the market does respond to all these signs. But by and large, I think indicating a more, solid fundamental strength in the Indian market. Is that right? Yes, definitely the rate of growth is very good compared to other economies. Indian economy is growing faster. Companies are also making profit. The number for the companies, bottom line, improved, and continuously there is an increase. So I think in that case, the confidence of the investor for the stocks and companies is also very high due to all these factors. Right. हरवीर जी, आगे क्या होगा ये कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी आज की जो ऊंचाई है, अगर हम एक अनुमान की बात करें तो आप क्या देखते हैं आने वाले दिनों में क्या रहेगा? देखिए, ये जो जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि जो फंडामेंटल्स हैं इंडियन इकोनॉमी के, वो बेहतर है. हमारा जो बैंक्स हैं उनकी हालत अब काफ़ी अच्छी है. इसके अलावा जो कंपनीज़ हैं, कंपनीज़ के प्रॉफिट सुधर रहे हैं. ये बात अलग है कि अभी रूरल मार्केट जो है वो उस तरीके से रिकवर नहीं हुआ है, क्योंकि रूरल डिमांड अभी पूरी तरीके से नहीं आई है. लेकिन हो सकता है कि अगर रबी सीजन अच्छा रहता है, क्योंकि खरीफ में हमने थोड़ा दिक्कतें देखी, उसका इम्पैक्ट भी आया है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और रूरल इकोनॉमी के ऊपर. सो अगर रूरल डिमांड भी इम्प्रूव कर जाएगी तो कंपनीज के प्रॉफिट्स और बढ़ जाएंगे. उस स्थिति में लगता है कि मार्केट के लिए काफ़ी फेवरेबल सिनेरियो बनेगा. Wanting to understand from you, Harveerji, that of course, experts say there is no wrong time to enter the market, right? And no right time to exit the market. But what do you feel that means for an investor who's still saying, okay, a certain part of my money I want to put in the market, but some people are, being advised, no, wait for the market to calm down. Do you think that people should still start looking at the right stocks and still invest? Actually, yes, those who want to
invest in the equity market, you already mentioned that is the right thing, that there is no right time and no wrong this thing. So it is not necessary that market will correct and then you have to enter at that time. Market is moving upwardly. Since March, if you see that drop in the March, Right. bottomed out in March and then continuously increasing. So those who have entered at that time must be seeing the benefit of that investment in the market and reaping the benefit of that. So as our sponsors say ना, सोच कर समझ कर invest कर, right? Yes. Well, it's time for a short break. Listeners, stay with us. सुरक्षित कल के साथ साथ एनपीएस आज आपको एक नया आत्मविश्वास भी देता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। मिलिए एक और दान बहादुर से। इन्होंने गारंटीड रिटर्न्स के प्रॉमिस पर इन्वेस्ट किया है। प्रॉफिट पक्का है, गाड़ी भी पक्की। मार्केट में रिस्क हमेशा होता है, कोई गारंटी कैसे देगा? आप छोड़ो ना। और आप हाथ धो लो पैसों से। गारंटीड रिटर्न्स धोखा है। स्टॉक मार्केट में लापरवाही न बरतें, दान बहादुर न बने। हाँ, अगर दान करना ही है तो अपनी सोच से करें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। इस शेयर बाजार से जुड़ा एक और सवाल लेते हैं। जो छोटे शेयर्स हैं उनमें देखा गया है कि लोगों को 3 गुना फायदा हुआ है। इस पूरे साल की बात कर रहे हैं। तो लेकिन जो बड़े जो हैं, जो लार्ज कैप है, उसमें उतना फायदा नहीं हुआ। इसके पीछे क्या कारण देखते हैं? नहीं, देखिए, अगर आपको बड़े स्टॉक्स अगर खरीदने हैं तो यू नीड मोर मनी, और उसमें अगर मूवमेंट है तो उसके लिए आपको उसी तरीके के पैसे की ज़रूरत है। तो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स की अगर आप बात करेंगे, वो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बड़े स्टॉक्स के लिए कम हो जाता है। और जो स्टॉक्स रीच में है, जिसमें आप एक रीजनेबल नंबर बाई कर सकते हैं एक सर्टेन अमाउंट के अंदर, वहाँ पर अगर कंपनियाँ अच्छा कर रही हैं, अगर कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस है, तो वहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टर्स आते हैं। तो इट मीन्स ऑलरेडी ये डिमांड सप्लाई का मसला है। तो ज़्यादा डिमांड है तो वहाँ मूवमेंट फिर उसी तरीके से ज़्यादा होता है। रुपया का हाल जानते हैं। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 83 रुपये 35 पैसे पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स दिन के कारोबार में गिरावट के साथ 101.43 पर कारोबार कर रहा था। And now we will take a look at the Asian markets with Vibhuti ji. जी जी, जहाँ तक एशियाई और यूरोप के बाजार का हाल है गौरा जी, तो सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच एशियाई शेयर आज बढ़त के साथ बंद हुए हैं। हांगकांग के हैंग सेंग में 1.7% की तेजी, जबकि जापान के निक्केई में 1.10% की बढ़ोतरी हुई। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 1%, चीन के शंघाई कंपोजिट में 0.5% और दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.4% की वृद्धि हुई है। दिन के कारोबार में यूरोपीय शेयर बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक लंदन का फुट्सी 0.5% चढ़ा है। जर्मनी का डैक्स और फ्रांस का कैक दोनों 0.2% ऊपर कारोबार कर रहे थे। Harviji, you had earlier mentioned global cues, and here we are seeing that the markets are rising. Now, there was a time when India was defying global cues, our market was strong, and right now we're in sync. So, do you think somewhere the international markets have built in their factors and are now on a steady path and more or less stabilized, less volatility? I think global market may see the volatility. It is not necessary, because reason is that market is taking clue from the US Fed that there may be, as I already mentioned, that there may be a change of stance by US Fed on interest rate. But at the same time, because some economies are showing the sign of slowing down, some sectors are really not good. In that case, and today we have seen that because now this energy prices are not hardening, and some supply may come from Venezuela because US has given some basically allowing the oil from there, so supply will increase. So these are the factors, but we cannot rule out that Western economies are not really doing well, and Chinese economy is also not in a very good shape. So we have to see what kind of indication we get from the economy in the near future, and that will define the movement of the market.
Right. Okay. जी, और आज की बड़ी खबर, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति सीसीए ने आज 2024 सीजन के लिए कोपरा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि 2024 सीजन के लिए एमएसपी में पिछले सीजन की तुलना में मिलिंग कोपरा के लिए 300 रुपये प्रति क्विंटल और बाल कोपरा के लिए 250 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि उच्च एमएसपी नारियल उत्पादकों के लिए बेहतर पारिश्रमिक रिटर्न सुनिश्चित कर देगा। 2014-15 में मिलिंग कोपरा के लिए एमएसपी 5,250 रुपये प्रति क्विंटल थी और 2024-25 में यह 11,160 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएगी। हरवीर जी, आप इस फैसले को किस रूप में देखते हैं? देखिए, जो नारियल के उत्पादक किसान हैं उनके लिए अच्छा संकेत है, और जो उसकी सरकारी खरीद जो एजेंसियां करती हैं वो करें। कॉटन बेसिकली इसके लिए जो बोर्ड है, कोकोनट बोर्ड, वो ज़्यादातर खरीद करता है, मार्केट में इंटरवीन करता है। पिछले दिनों जो कोपरा किसान थे उन्होंने इसकी मांग उठाई थी कि उनको बेहतर दाम मिले और उनके उत्पाद की एमएसपी के ऊपर खरीद की जाए। उस मांग को भी देखते हुए सरकार ने लगता है पॉजिटिव रेस्पॉन्स किया। लगभग 10 साल में जो एमएसपी है वो दुगुना से कहीं ज्यादा हो गया। हाँ जी जी। अब गौरा जी, जो सड़क परियोजनाएं हैं, वो जो बिहार की जो महत्वपूर्ण फैसला है और त्रिपुरा असम की, वो बताइए आप श्रोताओं को। Right. I think this is an interesting, and before Vibhuti I move into that, wanting to understand, and agriculture is your area of great expertise, Harveer ji. It's a cash crop. So from, I think, the turnaround time from the amount of money being spent in the market and for it to come back to the farmer, that circuit is a little shorter, so farmers will be benefited faster than regular crops? Yeah, actually, there are multiple factors for agriculture production and the earning of the farmers. Right. There are some cash crop like sugarcane is also a cash crop, cotton is also cash crop, other plantation crop including copra is also cash crop. So there is a certainty that farmers get the right price at a reasonable level, and direct it goes to them in that case. So always farmers prefer to go for the cash crop for better income. Liquidity also. Yes, liquidity also, because but even in case of other crop like food grain, government procure a lot of food grain. That is also immediately gives the liquidity to the farmers. Okay, right. Moving on to two other decisions, Mr. Thakur said the CCEA also approved the construction of a new 4.56 kilometer long, 6-lane, high-level and extra-dosed cable-stayed bridge across the river Ganga connecting Digha and Sonepur in Bihar. He said the total cost for the project is over 3,064 crore rupees. The bridge will make traffic faster and easier, resulting in overall development of the state, especially North Bihar. The minister said the CCEA also approved the improvement and widening of a 135-kilometer stretch of the Khowai-Harina Road in Tripura. He said the project involves an investment of over 2,486 crore rupees, which includes a loan component of over 1,511 crore rupees. So earlier the first decision was on agriculture. Now we are looking at infrastructure. So and this government has actually a great boost to infrastructure has been given. So Bihar and Tripura, I think Tripura, the northeastern side, where again the government has decided to really pitch in a lot of effort towards that, and North Bihar, which I think development-wise needs a lot more assistance. So definitely two targeted projects. Yes, any good connectivity directly relates to the economic development of the area. If you have connectivity, people's and goods movement becomes easier and faster, and attracts the opportunity of investment in those areas. So that is the reason, like this project in Bihar as well as the road project of Tripura will be, I think will increase the development of the state and in the area, and will make life better for the citizen in the area. Absolutely, and a direct impact on livelihoods also, because infrastructure and making infrastructure gives jobs. So I think by that whole cycle of money rotating in the economy.
Yes, basically, public investment is a very important component for the growth of the economy. When public investment comes from the government spends money, the private investment follows the government investment, and then it becomes a cycle of investment in the economy, which generates jobs and economic development. तो निश्चित रूप से जो दोनों ही परियोजनाएं हैं वो एक क्रांतिकारी कदम से कम नहीं है, क्योंकि गंगा पे 6 लेन का पुल बनना, माल ढुलाई में आसानी, परिवहन में आसानी, और जो बौद्ध सर्किट है, जो अन्य धार्मिक स्थल है और कई जिलों को जोड़ने का काम होगा, और वहीं त्रिपुरा असम में जो है वहां भी परिवहन काफी सुगम होने वाला है। तो एक संक्षिप्त विज्ञापन के लिए समय है, जल्द लौटते हैं। एक आकर्षक निवेश के साथ साथ एनपीएस समानता का भी साधन है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। मिलिए दान बहादुर जी से। अरे अमीर बनने का सबसे आसान तरीका है ऑप्शन ट्रेडिंग। सारे रिस्क समझे, पूरी रिसर्च की, एक्सपीरियंस है, थोड़ा थोड़ा, और लॉस होगा पूरा पूरा। ऑप्शंस में रिस्क ज्यादा होता है, समझ और क्षमता के हिसाब से लें। स्टॉक मार्केट में लापरवाही न बरतें, दान बहादुर न बने। हाँ, अगर दान करना ही है तो अपनी सोच से करें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। Welcome back, listeners. You're tuned to Market Mantra. Our next headline story, good news from SBI. The State Bank of India has hiked interest rates on certain fixed deposits or FDs by up to 0.5% on deposits below 2 crore rupees. The increase in FD rates is effective from today only. For deposits below 2 crore rupees, the bank has hiked the interest rate on deposits maturing between 7 days to 45 days to 3.5% from 3%, which is a 0.5% hike. The SBI has raised the interest rate on a tenure of 46 days to 179 days to 4.75% from 4.5%, which shows a 0.25% increase. The bank has increased the interest rate on deposits of 180 days to 210 days from 5.25% to 5.75%. For FDs maturing for 211 days to less than a year, the interest rate has been raised to 6% from 5.75%. On deposits maturing between 3 years to less than 5 years, the interest rate has been increased to 6.75 from 6.5%. Other tenure rates are unchanged. Harveer ji, this is of course good news for safe investors, for investors who don't want to risk their money in the market, maybe also a certain demographic or older investors. So is this a lead for other banks also now? Yes, an increase in deposit rate is a good news for pensioners and those elder person, those who depends on their deposits income, live the life on that. And but anytime the rates of interest rate depends on the how economy is moving. Right. So it is the central bank's decision when the policy rates goes upward continuously. There was increase in the last two meetings. We have seen a pause, but earlier it was continuously increasing in that case. So, and this indication from SBI also shows that banks need more liquidity. So because if banks have more liquidity, then they will make the money by lending that liquidity to the borrowers. And if countries leader in the banking sector is increasing the deposit rates, it is sending a message, this is an indication to other banks also that there is a situation they have to increase the interest rate, and that is good for the depositor. Right. एक और महत्वपूर्ण खबर, सरकार ने अगले साल मार्च तक केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों द्वारा 50 लाख डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र का लक्ष्य रखा है। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने पेंशन भोगी कल्याण संघों और 16 बैंकों के नोडल अधिकारियों के साथ राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 2.0 की समीक्षा की। सरकार की ओर से कहा गया है कि 80 वर्ष से अधिक आयु के अति वरिष्ठ पेंशन भोगियों को की डीएलसी के लिए अत्यधिक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। साथ ही यह भी कहा गया है कि न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन की नीति के साथ पेंशन भोगियों का डिजिटल एम्पावरमेंट सरकार का एक घोषित लक्ष्य है।
So, Harveerji, again, just a short remark from you. Ease of living. And this is, we also have a young population, but we also have many, many senior citizens. That's also increasing by leaps and bounds. So, the digital life certificate, and in terms of ease of actually making life easier for senior citizens, as step in that direction? Yes, to continue for drawing the pension from a bank, if senior most citizens like those who have the age of about 80 years are forced to go to the bank and give the proof of life, and then pension will even continue, and to sign the papers and all. Instead of that, this kind of facility, when we are digitalizing everything and the digital infrastructure is available at a wide scale at everywhere now, I think this kind of move is really good. As you said, that ease of living, and particularly for those who are very elder, is a very important step, and I think the banks and the department must comply and to go forward on this line. On a lighter note, actually, it's also an intergenerational bonding activity, because many people who are old and in their 80s and 90s struggle with the digital medium, and where the younger generation comes, and it's like a bridging activity also. Yes, right. Because younger generation helps them out on Absolutely. this issue. Right. Look at the oil prices. Oil prices declined over 0.5% today as investors monitored Red Sea developments, with some major shippers resuming passage through the trade route despite continuing attacks. In intraday trade, Brent crude was trading at $80.65 per barrel, while U.S. West Texas Intermediate crude was trading at $75.09 per barrel when reports last came in. Harveerji, crude oil prices, and we have seen that, Brent crude is now crossing 80. Earlier people had said it's not going to go below 90. So somewhere, do you think that this between like a late 70s and to an early 80s is a range that is likely to stabilize in, because OPEC plus countries are also now wanting to not let it fall further? Yes, definitely those oil producer countries will not like that rates goes heavily down, because it is their earning, and that's why these organization OPEC plus control the supply to keep the rate at certain Absolutely. level. Right. आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी अनुबंध के लिए सोना बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक सोना 282 रुपये बढ़कर 63,307 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। मार्च अनुबंध के लिए चांदी 162 रुपये की गिरावट के साथ 74,864 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। वैश्विक बाजारों में सोना बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक दिन के कारोबार में कॉमेक्स पर सोना $2,075 और 70 सेंट प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था, जबकि चांदी $24 और 25 सेंट प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। Harveerji, thank you so much for coming on to our program. And now, before we close, a reminder of the headlines. Thank you so much. Key domestic stock indices hit fresh milestones today. Sensex ends above 72,000 mark for the first time. Nifty settles over 21,650. Cabinet approves minimum support price for copra for 2024 season. And State Bank of India SBI hikes interest rates on certain FDs by up to 0.5%. And that's it in this program. Namaskar. नमस्कार। मिलिए एक और दान बहादुर से। इन्होंने गारंटीड रिटर्न्स के प्रॉमिस पर इन्वेस्ट किया है। प्रॉफिट पक्का है, गाड़ी भी पक्की। मार्केट में रिस्क हमेशा होता है, कोई गारंटी कैसे देगा? आप छोड़ो ना। और आप हाथ धो लो पैसों से। गारंटीड रिटर्न्स धोखा है। स्टॉक मार्केट में लापरवाही न बरतें, दान बहादुर न बने। हाँ, अगर दान करना ही है तो अपनी सोच से करें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। अपने सुरक्षित भविष्य के साथ साथ वित्तीय स्थिरता के लिए भी एनपीएस पर भरोसा करें। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है।
मेरे पास मनपसंद जॉब तो है लेकिन पेंशन नहीं है। मेरा रिटायरमेंट नजदीक है पर मेरे पास पेंशन नहीं है। आप लोगों की परेशानी का समाधान है LIC's न्यू पेंशन प्लस, जो देता है मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स के साथ गारंटीड एडिशंस और साथ ही पार्शियल विड्रॉल भी। इस पॉलिसी के निवेशित पोर्टफोलियो में निवेशित राशि का जोखिम पॉलिसी धारक द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। बिक्री समापन से पूर्व अधिक जानकारी या जोखिम घटकों, नियम और शर्तों के लिए बिक्री पुस्तिका को ध्यान पूर्वक पढ़ें। LIC हर पल आपके साथ। This is Akashvani, the news read by Navneet Singh. The Cabinet Committee on Economic Affairs CCEA today approved